No, it's a boar. It's one of the most horrible uh, creatures, but he's beautiful. तो विचार बुद्धि है वो स्वयं पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ गए, भ्रमित हो गए कि नाक में से निकला हुआ एक शुकर, और शुकर अर्थात हमारे दैनंदिन जीवन का सबसे खतरनाक एक प्राणी इतना विशाल हिमालय पर्वत जैसा बन गया है। और ऐसा नहीं कि वो कृष्ण स्वरूप में बांसुरी बजाते हुए आए, शुकर रूप में आए। So, in another verse in this episode, it says in the purport, we should always remember that although the body of a hog is material, आगे तात्पर्य में कुछ श्लोक बाद तात्पर्य में लिखा गया है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि उनका स्वरूप जो था वो एक शुक्र का है, but the hog form of the Lord was not materially contaminated. और एक शुक्र का जो शरीर होता है वो साधारण भौतिक शरीर होता है, किंतु भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। It is not possible for an earthly hog to assume a gigantic form, इस संसार का साधारण शुक्र जो है वो विशाल स्वरूप कभी भी धारण नहीं कर सकता, spreading throughout the entire sky, जिसका स्वरूप जो है आकार जो है संपूर्ण अंतरिक्ष को भर दिया, beginning from Satyaloka, सत्य लोक से लेकर नीचे तक। and his body is always transcendental. और उनका शरीर आकर्षणीय है और दिव्य है। Therefore, assuming the form of a boar is only his pastime. इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि शुक्र स्वरूप धारण करना ये भगवान की लीला है। The body of the boar is actually made up of all the Vedas. और यह शरीर जो है शुक्र स्वरूप ये साक्षात वेद स्वरूप, Or transcendental. दिव्य स्वरूप। But since he had assumed the form of a boar, क्योंकि लेकिन उन्होंने शुक्र रूप धारण किया था, इसलिए he began to search out the earth वो पृथ्वी को ढूंढना शुरू कर दी by smelling, अपने नासिका से, just like a hog. जैसे कि शुक्र करता है। The Lord can perfectly play the part of any living entity. भगवान किसी भी जीव के व्यवहारों को दर्शा सकते हैं। The gigantic feature of the boar was certainly very fearful. यह विशाल स्वरूप शुक्र का दिखने में तो बहुत डरावना है For all the non devotees. जो भी अभक्त है उनके लिए, But to the pure devotees of the Lord, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं he was not at all fearful. वो बिल्कुल ही डरावने नहीं थे, On the contrary, बल्कि he was so pleasingly glancing upon his devotees that all of them felt transcendental happiness. वो इतने सुंदर और प्रेम से दृष्टिपात कर रहे थे अपने भक्तों के प्रति कि सारे भक्त पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और संतुष्ट हो गए। So you see, when the non devotees see Krishna and in his different incarnations, they're afraid. इसलिए जब भक्त भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं या उनके किसी भी अवतार का दर्शन करते हैं तो डर जाते हैं। Not only the non devotees, when Nrsingadev appeared, Brahma, Lakshmi, and so many others, they were afraid. सिर्फ अभक्ति नहीं, कभी कभी ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी जैसे कि नरसिंहदेव के प्रसंग में वो भी जो है भयभीत हो गए। They wanted to put a garland on Nrsingadev, but nobody was, everyone was so afraid they didn't dare do it. वो भगवान नरसिंहदेव को माला पहनाना चाहते थे, लेकिन उनका स्वरूप और उग्र स्वरूप देखकर उन्हें भय लग रहा है। But when they asked Prahlad to put the garland on Nrsingadev, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, फिर उन्होंने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जो है Prahlad was not afraid बिल्कुल भयभीत ना होते हुए, because he recognized that this is my Lord. वो भगवान के समक्ष चले गए क्योंकि इस समझ में उनको आ गया कि ये साक्षात मेरे प्रभु हैं। And he walked up to him, he wasn't afraid, and he garlanded the Nrsingadev. उनके समक्ष पहुंचकर वो जाकर प्रभु को माला पहनानी। And Lord Nrsingadev said to Prahlad, he said, Prahlad, you're such a nice devotee. Just ask any benediction from me, I'll give to you.
भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद से कहा कि आप इतने अच्छे भक्त हो, आप कोई भी वरदान हमसे मांग लो, हम आपको दे देंगे। And Prahlad said, "My dear Lord, please don't tempt me with such a blessing. I'm satisfied simply chanting your holy names and serving you." प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु इस प्रकार से हमें उकसाएं मत कि वरदान मांगने के लिए हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। Yeah, don't uh, entice me to have some wonderful material opulence. कोई भौतिक सुख के लिए हमें मोहित विमोहित मत कीजिए प्रभु। But if you insist on giving me something, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमें कुछ प्रदान करना, then please erase all material desires from my heart. कृपया करके हमारे हृदय से सारे भौतिक अभिलाषाओं को नष्ट कर दें, So I will always remain your servant. ताकि हम हमेशा से आपके सेवक बनकर रहें। You see, this is a difference between demons and pure devotees. देखिए यही अंतर है असुरों में और भगवान के शुद्ध भक्तों में। What did Ravana want? What did Hiranyakashipu want? रावण हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे? They did tremendous tapasya in order to become Amara. वो बहुत तपस्या कर रहे हैं अमर बनने के लिए। That's asking for something material, to be free from death, so they can enjoy unlimited sense gratification. अमर इसलिए बनना चाहते थे ताकि असीमित और नित्य काल तक असीमित सुख की अनुभूति कर सके। ये सब कुछ भौतिक है। But Hanumanji and Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj and Narada Muni, they're not asking for anything material, although it's being offered to them. लेकिन हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, हालांकि उन्हें मिल रहा था कोई वरदान, किंतु उन्होंने कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं दिखाई। When Hanuman went to Lanka and he found Sita Devi, and he said to her, "Get on my back, I'll take you back to your uh, to Lord Ramachandra." And she said, "No, no, no, I'm not getting on your back. You're not my husband. Lord, my Lord has to come and get me personally." हनुमान जी जब लंका पहुंचे और सीता माता को वहां पर देखा, उन्होंने कहा, माते आप हमारे पीठ पर बैठ जाएं, हम आपको तुरंत उस पार ले जाएंगे। तो माता ने कहा कि ना हनुमान, हमारे आप हमारे पति नहीं हो, और हमारे पति जब यहाँ पर आएंगे तो वो हमें सुरक्षित वापस ले जाएंगे। She was a chaste woman. She wouldn't touch anyone else or let anyone else touch her except her husband. वो सती हैं, इसलिए अपने पति के अलावा किसी और को स्पर्श नहीं करवाना चाहती थी। Now, Ravana kidnapped her, of course, रावण ने तो उनका अपहरण किया था, निश्चित ही, and held her prisoner for 1 year. और उन्हें पकड़ कर रखा हुआ था। But he couldn't actually touch her. एक वर्ष तक उन्होंने रखा, लेकिन उनका स्पर्श नहीं कर पाया। If he tried to touch her and force her to surrender to him, he would have died immediately. अगर जबरदस्ती स्पर्श करता तो तुरंत वो मर जाता था। He had been cursed by a great sadhu because he defiled a apsari called Ranga Devi. And because he did that, he was cursed that if he ever did that again to a woman, he would die immediately. एक साधु ने श्रापित किया था कि अगर वो किसी भी स्त्री का स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने एक स्त्री का शोषण किया था, तब उन्हें श्राप मिला। So he couldn't force Sita Devi to surrender to him, but he could entice her. तो सीता देवी को जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें मोहित विमोहित करने का प्रयास कर रहा था। So he came to her and said, "Listen, all my wives, beginning with Mandadari, he had he had more than 1,000 women that they were surrendered to him. He said, they will all be your servants, and I'll take you with my transcendental vimana anywhere in the universe, and we'll enjoy together, and we'll have excellent times." प्रलोभन देते हुए रावण ने कहा कि मंदोदरी और जितने भी और स्त्रियां हैं जो हमारे साथ रमण करती हैं, आप उनकी पटरानी, उनकी रानी बनोगे, उनकी सरदार बनोगे, और सिर्फ आप ही के साथ इस विमान में, दिव्य विमान में भ्रमण करते हुए हम दोनों खूब आनंद लूटेंगे। But Sita Devi said, "Anyone who knows a swan
is not interested in a crow. सीता देवी ने कहा कि अगर आप हंस जानते हो तो आपको कौवे से क्या काम। He got really insulted and he said, "Okay, I give you 1 week. I'm a Rakshasa. If you don't surrender to me, I'll kill you and eat you." उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया रावण का। अब धमकाने लगा कि अगर एक सप्ताह में आप मेरी बात नहीं मानी तो आपको काट कर मैं खा लूंगा। So Rakshasas, they eat meat, and the best meat for them is human meat, humans. राक्षस जो है वो मांस भक्षक है, लेकिन मांस में भी सबसे प्रिय जो मांस उन्हें लगता है वो है मानव का मांस। So in previous times, there were a lot of Rakshasas on the earth, पूर्व काल में बहुत सारे राक्षस इस पृथ्वी धरातल पर थे, but they were eliminated by Lord Ramachandra. किंतु भगवान रामचंद्र जी ने उन सब का अंत कर दिया था, मृत्यु प्रदान कर But दिया they've था। come back again. लेकिन पुनः वो प्रकट हो जाते हैं। You have uh, you have hamburger shops now in Delhi and all over India. Hindus are eating meat. It's not only the Muslims, the Hindus also. दिल्ली में महाराज ने देखा कि यहाँ पर भी बर्गर की दुकान आ गई जिसमें मांस होता है, और अब हिंदू भी ये सब खा रहे This is what Rakshasas do. हैं। ये राक्षस करते हैं। One time there was a man in Delhi, he was selling dog meat. दिल्ली में एक बार महाराज कह रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कुत्ते का मांस बेच रहा था। One man came up to him and said, "Bhai Sahib," he said, "nobody's going to buy this dog meat. Why are you selling this?" एक राहगीर ने आकर कहा कि भाई साहब आप ये क्यों यहाँ पर कुत्ता का मांस बेच रहे हैं, कोई नहीं लेगा। He said, "No, no, you don't understand." उसने कहा कि नहीं नहीं आपको समझ में नहीं आ रही है बात। "What do you mean I don't understand?" राहगीर ने पूछा क्या अर्थात क्या। "This is English dog." He said, "Give me 1 pound." तो बेचने वाले ने कहा कि ये कुत्ता साधारण नहीं है, ये अंग्रेजों का कुत्ता है, उसका मांस है। तो राहगीर ने कहा हाँ मुझे आप 1 किलो दे दे। So you see, beginning with Nehru and now so many Hindus, if it's Indian, they don't want it. If it's American or European, they want it, even if it's dog. हमारे कुछ पूर्व के नेता और उनके अनुयायी जिनमें से हम भी हो सकते हैं वर्तमान काल के, वो भारतीय कोई चीज पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कोई कह दे कि अमेरिकी है या बाहर से है तो तुरंत उन्हें पसंद आ जाता है। So this is a sad state that so many Rakshasas again are in Bharat. तो यह भारत की बदकिस्मती है कि इतने सारे राक्षस पुनः भारत में आज के समय है। But you can do something about it. लेकिन आप जो है इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। We have prashad. हमारे पास प्रसाद, If we distribute it to as many people as possible, अगर हम प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण करते हैं they can lose their taste for meat and come back to Krishna prasad. तो साधारण जनता जो है वो मांस का स्वाद भूलकर प्रसाद का स्वाद उन्हें उचक लेगी और उन्हें याद रहेगी। Now, what is it? What is the what makes meat, let's say, delicious for the Rakshasas? राक्षसों को मांस इतना स्वादिष्ट क्यों लगता है? Prabhupada explained this. It's ghee. प्रभुपाद ने बताया कि वास्तव में वो घी का स्वाद है। Because when, like for example, cow meat is not good because it doesn't have the ghee in it. उदाहरण दिया गया कि गौ मांस जो है उसमें ज्यादा घी नहीं होता है, इसलिए लोगों को उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। So it's very hard to eat cow meat. इसलिए गौ मांस खाना बहुत कठिन होता है। But bull meat is very delicious लेकिन जो बैल है उसका मांस वो बड़ा स्वादिष्ट because there's a lot of fat in it. The fat is there because of the ghee. क्योंकि बैल में बहुत चर्बी होती है और ये चर्बी अर्थात घी जैसा ही है। So therefore, if you cook with ghee, then everything tastes wonderful. इसलिए अगर आप घी में कुछ भी पकाते हो तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। But what happened about 60, 70 years ago, there was big advertisement in India, don't eat ghee.
eat dalda because ghee give you heart attack and dalda is healthy for you. आज से 60-70 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा यहाँ पर भारत में समझाने का प्रयास किया गया था सभी भारतीयों को कि आपको घी नहीं खाना चाहिए क्योंकि घी से हार्ट अटैक आ जाता है। आपको डालडा खाना चाहिए कि डालडा आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। But this is not true. लेकिन ये असत्य है। Dalda gives you heart attack and ghee is good for you. डालडा आपको हार्ट अटैक देता है पर घी आपके लिए अच्छा है। So what did the demons do? The Rakshasas, they convinced the Hindus to give up using ghee and using dalda and maida and also other junk foods like Horlicks drink and so forth. They're all junk foods. They're not real foods. And then because of that, there's massive number of Hindus that have high BP and diabetes and heart problems. तो हिंदुओं को पूरी तरह से समझा दिया गया था कि आपको घी नहीं खाना चाहिए, आपको डालडा खाना चाहिए, मैदा खाना चाहिए, यहाँ तक कि और भी ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, हॉर्लिक्स जैसा, ये सब खाने पर उन्हें उनके मन को भ्रमित कर दिया। और अब हिंदू जो है उसे बहुत सेहत का उसे बहुत समस्या हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, अन्य समस्याएं हो रही हैं। What's killing people in this country is dalda, maida, tea, and coffee. This is killing people in a massive way. आज जनता को जिस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और उनकी उन्हें मार भी रहा है वो है डालडा, मैदा, चाय और कॉफी। Previously, before the British came, nobody drank tea in India. They drank lassi. पूर्व काल में अंग्रेज आने के पूर्व भारत में चाय कोई पीता ही नहीं था, वो लस्सी पीते थे। Now, 4 o'clock in the afternoon, everybody has to have tea. And, आज and also they get the little crackers made with maida. आज जो है लोगों को बहुत आनंद आता है ये कहने में कि 4 बजे वो चाय पीते हैं, उसके साथ छोटा सा एक बिस्किट भी मिलता है मैदा का, वो भी। Okay, I diverted a little bit. But so here we see that this incredible creature called Varaha appeared and saved the world from destruction. यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा ही बहुत ही असाधारण प्राणी वराह जैसे वो प्रकट हुए और उन्हें संपूर्ण विश्व को समाप्त होने से, विश्व को नष्ट होने से बचा। So we should, before we go to the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we should read the first 9 cantos and learn about all the transcendental pastimes of the Lord. दशम स्कंद पहुंचने के पहले पढ़ने के पहले हमें प्रथम 9 स्कंद पढ़ लेना चाहिए जहां पर भगवान के अनेक लीलाओं का और अवतारों का वर्णन किया गया। Why? क्यों? Because by hearing pastimes like this, our concept of reality expands tremendously. जब हम ऐसे वर्णन पढ़ते हैं और श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं तो जिस चीज को सत्य मानकर हम जी रहे हैं उससे कहीं अधिक विचार करने योग्य बन जाते हैं। Everybody normally is living in a very limited time space module. हर व्यक्ति जो है बहुत ही संकुचित सत्य का जीवन जी रहा है। Because you have these small cars, यहाँ पर आप देखिए छोटी छोटी गाड़ियां हैं। most of the apartments are small rooms. आज रहने के जो कमरे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हो गए। When you go to work, there's small offices. ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं वो भी छोटा सा ही क्षेत्र है। Even in the house, the bathroom is small, the kitchen is small. घर में भी आजकल बाथरूम जो है उसका भी स्वरूप छोटा हो गया है, किचन भी छोटा सा बना हुआ है। So that limits your concept of reality. इसलिए व्यक्ति इतने ही जगह को जो है सत्य मानने मानने पर मजबूर हो जाता है। But here you're hearing about basically a pig the size of a thumb comes out of the nose of Brahma and becomes as big as the universe almost. लेकिन यहाँ पर देखिए मन को विस्तारित करने के लिए समझाया गया है कि छोटा सा अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का एक बराह नाक में से निकलकर संपूर्ण
ब्रह्मांड के आकार का बन जाता है। So now our mind begins to expand. तो छोटे से जगह से अब हमारा मन जो है विस्तार हो रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में। There's no longer little rooms. Now we're talking about gigantic forms of Varaha, Narsingha, and uh, expanding through space. तो छोटे छोटे कमरे से बाहर निकलकर उस कल्पना से बाहर निकलकर अब वराह नरसिंह देव जैसे विशाल स्वरूप का भी कल्पना हम कर सकते हैं। This is necessary if you want to understand Krishna. और ये बहुत आवश्यक है अगर हम श्री कृष्ण को पूर्णतया जानना चाहते हैं। Krishna is smaller than the smallest and bigger than the biggest. भगवान कृष्ण सूक्ष्माति सूक्ष्म है और साथ ही साथ विशाल से भी अधिक विशाल है। The size of your soul, as explained in Srimad Bhagavatam, is 1/10,000th the tip of a hair. आपका जो स्वरूप है आत्म स्वरूप है श्रीमद् भागवत में समझाया गया है कि आपके केश के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े समान हैं। You take one hair from your head अब एक केश अगर निकाल दें अपने सर से and you have to cut it longitudinally in 100 little strips. और उसको उस केश को सिधाई में आप 100 टुकड़ों में बांट दें। Then you take one of those 100 strips तो वो 1/100 जो एक भाग है and cut it again in another 100 strips. उसको पुनः आप 100 भागों में विभाजित करें। Now, you heard the description of it, but you can't do it. हमने आपको समझाने का प्रयास किया लेकिन करना किसी के लिए संभव नहीं है वैसे। Because what you end up with is 1/10,000th the tip of that hair. क्योंकि वैसे करेंगे तो 1/10,000वां भाग आपको प्राप्त होगा। And then Krishna enters into the heart of that jiva. तो ये जो स्वरूप है जीव का उसमें भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। Already the jiva is smaller than an atom. तो यहाँ पर अणु से भी सूक्ष्म छोटा है जीव का स्वरूप। And then Krishna enters into the heart of that jiva. और इतने छोटे से स्वरूप के हृदय में भगवान उससे भी अधिक छोटा स्वरूप धारण करके बैठ गए। You see, now most people will not believe this. अधिकांश लोग जो है इस बात को मानेंगे नहीं। But I'm going to prove to you now that it's true. लेकिन अभी महाराज जी आपको प्रमाण देंगे कि कैसे वो सत्य है। Now let me ask you a question. I'll ask one of the gentlemen. आपको एक प्रश्न पूछेंगे। Okay, I'll ask you. Okay, yeah. Don't be afraid. किसी के ओर संकेत करके कह रहे हैं कि डरो मत, आपसे हम पूछ रहे हैं। Before you were born, your father produced what's called sperm. आपके जन्म के पूर्व आपके पिताश्री जो हैं उन्होंने एक वीर्य कण जो है वो प्रकट किया। Do you know how big a sperm is? आपको पता है कि वो कण कितना उसका स्वरूप होता है? You need a microscope to see it. आपको एक खास प्रकार का चश्मा लगता है, माइक्रोस्कोप लगता है वो देखने में। And then that sperm is like a little fish. It came into the womb of the mother. और वो वीर्य कण जो है वो गर्भ में पहुंचता है। Would you deny that you were that sperm at one time? क्या आप इस बात को नकार सकते हो कि एक समय पर आप वो वीर्य कण थे? No, you can't. Does anybody want to deny it? No, I was never a sperm. कोई नकारना चाहता है इस बात को कि कभी भी वो वीर्य कण में नहीं थे? You see? That proves. Now, the sperm is not the jiva. The jiva is inside the sperm. And the sperm is already microscopic. तो ये वीर्य कण जो है वो अति सूक्ष्म है, लेकिन ये जीव नहीं है। जीव आत्मा जो है उस कण में। Now, do you have children? No. Okay. आपकी संतान है? So, नहीं, ठीक है। do you have children, sir? You have children? आपकी संतान है? Yeah. है। Do you remember making the sperm? आपको याद है कि कैसे वो वीर्य कण बना था? Huh? No, right? You don't know how it happened, right? But it came from your body. आपको पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन आपके शरीर से ही वो व्यक्त हुआ। Ladies, now many of you have children, right? Okay, for example, do you have children, Mataji? माता आपके संतान है? आपसे पूछ रहे हैं महाराज। Yes. हाँ।
Do you know how you made the baby in your stomach? क्या आपको ज्ञात है कि आपने कैसे बनाया था उस शिशु को अपने गर्भ में? You see, this is a mystery. देखिए, यही बात जो है, ये किसी को पता नहीं। Now, you don't know how the sperm was made, you don't know how the ovum was made, but how did the jiva get into the sperm? ना तो आपको पता है कि आपने वीर्य कण कैसे बना, ना ही आपको पता है कि आपके पास अंड कैसे आया, लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति हुई। कितना बड़ा रहस्य है। Mahavishnu glanced on the material nature, and jivas came out of his eyes and entered into Shiva Linga, which is a combination of the linga and the yoni. And from there, it entered into the material world, right into the sperm. भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया इस सृष्टि पर। उनकी दृष्टि में उनके दृष्टि बना हुआ था सारे जीव कणों से, जीवात्माओं से। ये शिवलिंग में प्रवेश हुआ, जहाँ पर अर्थात स्वरूप है लिंग का और योनि का, और वहां से संसार में सारे जीव जो हैं प्रकट हुए। Shiva Linga is a combination of linga and yoni. It's not just the linga, it's linga and yoni. तो समझा रहे हैं कि शिवलिंग जो है सिर्फ लिंग नहीं है, लिंग भी है और योनि भी है, जिस पर लिंग स्थापित है। And this is the way, it all begins by the vision of Mahavishnu, and then enters into the yoni and the linga, and then it goes into the jiva. और ये रहस्य है कि भगवान विष्णु की दृष्टि के माध्यम से जीव जो है लिंग और योनि के समावेश से व्यक्त होता है। Shrimad Bhagavatam, the whole book is full of science. श्रीमद् भागवतम एक पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करता है। It's not the junk science that you're being taught in school. ये साधारण जो विज्ञान समझाया जाता है पाठशालाओं में, वैसे सीमित ज्ञान नहीं। This is real science. ये पूर्ण वास्तविक ज्ञान। Just like the husband doesn't know how he makes the sperm, the wife doesn't know how the baby forms in her body. जिस प्रकार से पति को पता नहीं है कि वीर्यकण कैसे उत्पन्न होता है, और पत्नी को ये नहीं पता है कि गर्भ में शिशु धारण कैसे, वर्धन कैसे होता है। All the information for making that body of the baby is in that microscopic sperm. संपूर्ण जानकारी की एक संतान कैसे उत्पत्ति होगी और कैसे वर्धन होगा, ये संपूर्ण जानकारी किसी और के पास नहीं है, सिर्फ उस कण में। See, you're seeing this building being built, right? You see the concrete, and you see the iron bars, and you see the bricks, and it's all being put together. ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो है सीमेंट है और यहाँ पर सलाखें हैं, और इन चीजों को मिलाकर ये बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। Now, just imagine what's happening in the body. That little sperm comes and connects with an ovum, which is a nutrient source, right? And because all the intellectual property is in the sperm, then it becomes a little pea with 9 holes, and then those 9 holes become 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, a mouth, a genital, and anus, and then arms appear and legs appear. Then there's heart, and there's liver, and there's gallbladder, and there's blood vessels, and there's a pump. And how does this happen? This is a miracle. तो वीर्यकण जो है जब अंड के साथ उसका संगम होता है, तो इस अंडे में सारी जानकारी है कि कैसे आगे विस्तार होगा। उस जानकारी का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा मटर के समान एक शरीर व्यक्त होता है, जिसमें 9 छिद्र होते हैं, 2 आंखें, 2 कान है, 2 नासिकाएं हैं, एक मुंह है, और मलमूत्र त्यागने के 2 और छिद्र हैं, और फिर आगे जाकर इसमें से 2 हाथ निकलते हैं, 2 पैर निकलते हैं, आपका हृदय व्यक्त होता है। ये सब जो है पहले से जानकारी है, और वहां से ये सारा विस्तार होता है। This is a miracle. And then that baby comes out. It's got little arms and little legs and little feet, and it's eyes and ears and heart and everything. And it's a living being. It's a miracle. तो गर्भ में स्थित
अपने आप एक चमत्कार है घर के भीतर जो आपको पता भी नहीं चलता, और फिर एक शिशु प्रकट होता है जिसके आप छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, उसके आंख और उसके शरीर के भीतर हृदय काम करता हुआ, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? Nobody knows. The doctors don't know how it's happening. किसी The, को पता नहीं है कि कैसे बनता है, ना ही the, डॉक्टर को पता है, the scientists don't know how it's जो happening. वैज्ञानिक है उसे भी पता नहीं, The philosophers don't know how it's जो happening. सिद्धांतवादी है उन्हें भी पता नहीं, But it's happening. किंतु हो तो रहा है। And you have to admit there's a superhuman being called Krishna. He's not a human being, he's a transcendental person. He has all this knowledge and he's able to do things that we could never do. और इसलिए ये बात बहुत हमें नम्रता से स्वीकारनी ही पड़ेगी कि परम व्यक्ति, एक परम पुरुष है श्री कृष्ण, जो साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण एक अति विशेष व्यक्ति है, जो ये सब जानते हैं और जिनके इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है, ये करवा रहे हैं। And then people say, I don't believe in God. और फिर भी लोग कहते हैं कि हमें भगवान में विश्वास है। You don't believe in God because you are ignorant. आप भगवान में विश्वास नहीं ऐसे इसलिए बोलते हैं कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो, अज्ञानी हो। You're seeing miracles right in front of your eyes. Nobody knows how it's happening. And then you say there's no God? आंखों के सामने हर क्षण जो है आप यह चमत्कार देख रहे हैं और फिर भी आप कहते हैं कि भगवान नहीं है। So, what's happened is today there's no education. They are teaching tamas in the schools. इसका कारण यह है कि आज पाठशालाओं में जो योग्य ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, वो नहीं सिखाया जा रहा है। जो ज्ञान सिखाया जा रहा है उससे तमस है, वो अज्ञान है। What is tamas? तमस होता क्या है? In school, they say there's no way that science can validate the existence of a God. स्कूल में, पाठशाला में सिखाया जाता है कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं हमारे पास जिसे सिद्ध कर सके कि भगवान का अस्तित्व होता है। Because everything is empirical. That means they only believe things that they can see and measure. जो दिखता है या जिसकी नाप तोल कर जिसको समझा जा सकता है, इन्हीं चीज को मान्यता दी जाती है पाठशालाओं में। So, therefore, because they can't measure, they can't see the soul, they can't measure or see the spiritual world, they can't measure or see so many things, they say it doesn't exist. क्योंकि आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है उनके लिए, या आध्यात्मिक जगत को समझना, नापना तोलना संभव नहीं है। कितनी और चीजें नहीं नाप तोल सकते, इसलिए वो बहुत ही आसानी से कहते हैं कि इनका अस्तित्व ही नहीं है। Then they say, after death, there's nothing because we can't see it, we can't measure it. मृत्यु उपरांत क्योंकि ना तो हमें कुछ दिखाई देता है, ना ही उसके हम उसका मापदंड कर सकते हैं, इसका मतलब है मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। So what do? Now, our the universe is gigantic, and Vaikuntha is bigger, and Golok is even bigger. Now, but now they reduced all that all the way down here to one life, because they say after death there's nothing, and there's no God, there's no Vaikuntha, there's no Goloka. They brought it down to almost zero. Your life is almost zero. तो ये ब्रह्मांड विशाल है, इससे भी विशाल वैकुंठ है, गोलोक का भी उससे अति विशाल स्वरूप है, किंतु अब यह कह देना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, अर्थात इस सारे विशालता को हमने अब कम करके उसे शून्य के बराबर कर दिया। So what they've done is they reduced you to animal life. और इस प्रकार से उन्होंने विमोहित कर दिया है कि हम पशु की तरफ खाली अल्प बुद्धि का प्रयोग करें। What do animals do? पशु करता क्या है? They eat, they sleep, they mate, and they defend. खाता है, सोता है, संभोग करता है और अपनी रक्षा करता है। Would you admit that most people now are just eating, sleeping, mating, and defending? तो क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि आज के समय में अधिकतर जो जन समुदाय है वो सिर्फ
आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लगा हुआ है, खाना पीना सोना और मैथुन जी में। The difference between an animal and a real human being is that the human being can understand his or her relationship with God. मानव ही एक प्रजाति है जो भगवान के साथ अपना संबंध समझ सकता है। यही अंतर है मानव में और जानवरों में। But there are many people now, they don't care about God. They just eat, sleep, mate, and defend. They've become animals. बहुत सारे लोग आज सिर्फ खाना सोना अपनी रक्षा करना संभोग करना इसी में मन लगाए हुए हैं, इसलिए वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। This is very dangerous ये सभी के लिए बहुत खतरनाक है, because to reach the human form of life, you have to go through 8 million species of life. 80 लाख योनियों से बीतने के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। In other words, there's aquatics, there's plants, there's reptiles and snakes, there's birds, there's bugs, there's birds, then there's mammals, and then you come to human beings. तो जलचर है, फिर स्थावर है, उसके बाद कृमि कीटक है, तत्पश्चात पक्षी हैं, प्राणी हैं, और उसके बाद इस सब के सारी योनियों से जाने के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। So none of those species can understand their relationship to God. इसलिए बाकी मानव छोड़कर जितने अन्य योनियां हैं, कोई भी भगवान का अस्तित्व नहीं समझ सकता। It's only in the human form that you have the equipment to understand God. खाली मानव योनि में आपके पास सुविधा होती है कि आप भगवान के अस्तित्व को समझकर साक्षात्कार कर सकते हैं। You have a mind, you have eyes, ears, nose, tongue, skin, genital, anus. You have basically you have these senses: eyes, ears, nose, tongue, skin. You have the mind, and you have intelligence. These are knowledge acquiring senses. मन बुद्धि के साथ आपके पास पंच इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, जिसके मदद से आप अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। But if you only use them for sense gratification, then you're going to waste your life and you're going to go back into those 8 million species. लेकिन अगर आपने इन पंच इंद्रियों को मन बुद्धि के साथ सिर्फ इंद्र तृप्ति में या इंद्र भोग में उसका प्रयोग किया, तो आपका जीवन जो है व्यर्थ गया और आपको पुनः पशु योनि प्राप्त हुई। But if you use the eyes, ears, nose, tongue, skin, the mind, and intelligence to understand your relationship with God, you become liberated from the cycle of birth and death. लेकिन अगर आप इन 80 लाख योनियों से बाहर निकलकर मानव योनि में स्थित होते हुए इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। Right now, your jiva, your soul, is located in the heart, and next to the soul is Paramatma, the super soul, or Krishna. So, when Krishna sees that you take an interest in him, then he takes an interest in you. Shinvata swakata Krishna punya sravana kirtana hridyantakstu badhrani viduna suhitsitam. To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is righteous activity. And for one who hears about Krishna, Krishna, who is dwelling in the heart of every living entity, takes a special interest in the jiva and helps the jiva progress spiritually by giving the jiva knowledge so that the jiva can come back to him. भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में समझाया गया है, ये जो श्लोक है उसमें समझाया गया है कि हृदय में भगवान जो है हृदय में आत्मा स्थित है और उसी के बगल में परमात्मा स्थित हैं। और जब जीव आत्मा जो है भगवान के सुंदर कथाओं में और सेवा में सुनने में और सेवा में लग जाता है, तो भगवान जीव में रुचि ले आते हैं, जिससे कि जीव भगवान में और रुचि निर्माण कर सके। I'm going to ask you a question. Don't be afraid. If you heard, if someone comes up to you and says, "What is your name? What is your name?" Rajkumar. They say, "Rajkumar Prabhu, there's one man in Aurangabad. He's talking about you all the time, saying what a good person you are. You're genuine, pakka devotee,
and you're honest, and he's just speaking all good things about you. Would you want to know who that person is? तो महाराज जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति इस शहर में आकर कहता है कि बहुत ही नेक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कार्य करता है, सभी की मदद करता है, तो क्या आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे? तो उत्तर में कहा उन्होंने, निश्चित। So now understand this. Srila Prabhupada, how does he help us understand transcendental knowledge? He begins with what you know to help you understand what you don't know. श्रील प्रभुपाद जी का तरीका समझने का प्रयास कीजिए कि वो वहां से शुरुआत करते हैं जिस चीज को की जानकारी आपके पास है, ताकि उसका प्रयोग करके जो आप नहीं जानते हो उसे समझ पाओ। Just like if someone was speaking nice about you, you would want to know who they are. जैसे कि अगर आपके बारे में कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से जानना चाहोगे कि वो व्यक्ति है कौन जो आपके बारे में इतना अच्छा बात So करेगा। that's what this verse says. First canto, second chapter, 17th verse. Shinvata swakata Krishna punya shravana kirtana. Hridayantak stobadrani vidunoti suhit satan. If you hear about if you hear about Krishna from the Vedas or hear about him directly from Bhagavad Gita, that is righteous activity. श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय 17वें श्लोक में जो महाराज जी ने बताया, उसमें कहा गया कि अगर आप कृष्ण के बारे में वैदिक ग्रंथों से श्रवण करते हो या अन्यथा आप कृष्ण के बारे में जानते हो या श्रवण करते हो, ये आपके लिए धार्मिक क्रिया है। And this is righteous activity. And Krishna, who's in your heart, when he sees you have an interest in him, he takes an interest in you. और जब आप ऐसे धार्मिक और योग्य क्रिया में लग जाते हो, युक्त हो जाते हो, भगवान देखते हैं कि आप युक्त हो चुके हो, तो भगवान आप में रुचि लेने लगते हैं। And he gives you spiritual knowledge. और तत्पश्चात भगवान आपको दिव्य ज्ञान प्रदान Ye करेंगे। yatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mamavart manavartante manusya sarvat samsaha. In other words, he reveals knowledge to you through the heart. श्लोक में भगवान कहा जा रहा है कि भगवान ज्ञान आपको आपके हृदय में प्रदान करते हैं। Because you take an interest in him, he takes an interest in you. क्योंकि आपने उनमें ध्यान लगाने का प्रयास किया, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। And he protects you so you can continue learning about him, and he instructs you so you can become a pure devotee. वो आपको संरक्षण देते हैं ताकि आप उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सको, और वो आपको उपदेश करते हैं जिससे कि आप उन तक पहुंच सको। So you take care of Krishna, Krishna takes care of you. तो अगर आप कृष्ण के प्रति कृष्ण का ध्यान रखोगे, तो भगवान जो है आपका पूर्ण ध्यान रखेंगे। Now we started from the known, that is, you heard that some man speaking nicely about you all the time, and now you want to find out who that is. To understand the unknown, Krishna is in your heart. He's the closest person to you. If you take an interest in him, he'll take an interest in you. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कह रहा था, आप पर ध्यान लगा रहा है, तो आप भी उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहोगे। तो ये उदाहरण दिया था। तो अब समझिए कि भगवान सबसे निकटतम व्यक्ति हैं हृदय में आपके। अगर आप उनमें ध्यान लगाओगे, तो वो आप में ध्यान लगाएंगे। But if you don't take an interest in him, then you come under the control of the devatas. लेकिन अगर आप उनमें ध्यान नहीं लगा पाए या आपकी उनमें रुचि नहीं है, तो अब आपको देवताओं की आवश्यकता पड़ सकती है। If you take an interest in him, you come under his control, अगर आप Krishna's control. अगर आप भगवान में ध्यान लगा रहे हो, तो आप पूरी तरह से भगवान के अधीन हो। But if you don't have any interest in Krishna, then you come under the control of the devas like Durga Mata, like Yamaraj, like Shivaji. It's not the same thing. लेकिन अगर आप किसी प्रकार से भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो अब देवताओं का आपके ऊपर नियंत्रण होगा। जैसे कि यमराज जी का आप पर नियंत्रण होगा, दुर्गा माता का आपके ऊपर नियंत्रण होगा, शिव जी का आपके ऊपर नियंत्रण होगा।
See, the devatas, they can do two things. देवता आपके लिए दो कार्य कर सकते हैं। If you accept them like a guru अगर आप उनको गुरु मानकर अपने जीवन में स्वीकारते हो and pray to them, please help me to understand who Krishna is. और देवताओं से आप प्रार्थना करते हो कि कृपा करके हमें आप बताएं, साक्षात्कार दिलवाएं कि कृष्ण कौन है। Just like the gopis, they were praying to Durga Mata, please help us to be always with Krishna. उदाहरण के लिए जिस प्रकार से गोपियां जो है दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी कि कृपा करके कृष्ण के प्रति हमारा मन लगे, ऐसा आप वरदान दें। So then she helped them to gain the opportunity to be always with Krishna. और क्योंकि वो कृष्ण की संगति की प्रार्थना कर रहे थे तो माता दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें कृष्ण का संग हमेशा के लिए प्राप्त हो गया। But if you approach the devatas for material benefits, लेकिन अगर आप देवों के पास अपने भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए जाते हो, Dhanam Dehi, Janam Dehi, Rupam Dehi, Dehi Dehi, Dehi Dehi, then that becomes a curse. They give you what you want, but then they'll take it away from you and you go crazy. तो इस प्रकार से ये वृत्ति रख कर के कुछ चाहिए, आप जाते हो और अगर वो दे भी दें तो ये वास्तव में आपको लगता है कि आनंद है, लेकिन है ये आपके लिए श्राप, क्योंकि कुछ समय बाद वो आपसे छिन जाता है। You ever see that poster of Durga and she has a trisul and she's sticking it in the chest of Shiva and he's on the ground and she's sticking that right in his chest? आपने वो चित्र जो है कहीं देखा होगा जहां पर दुर्गा माँ अपने विकराल स्वरूप में हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिव जी के छाती पर वो त्रिशूल लगाई हुई है। You see? She, or ever see Durga's form as Kali Mata with her red tongue out and she has all these armaments? You know, it's very ferocious. काली स्वरूप में देखिए उनकी जीवा बाहर उन्होंने प्रकट किए हुए लाल रंग की जीवा है और सारे उनके हाथ में औजार हैं, हथियार हैं, ऐसा विकराल स्वरूप। And you know the story of uh, Putana. The Rakshasas, they can change their body. So Putana changed into a body of a beautiful woman and asked Mother Yasoda, can I give my milk to your son? And she thought she was like some heavenly devata, and she gave Krishna to her. But she was actually Putana, a horrible demon. It was like 6 to 12 miles long, but she became like a normal person almost. And but Krishna wasn't fooled. और And yeah. और एक जो पूतना का उदाहरण है, वो एक राक्षसी थी और वो स्वरूप बदलने की शक्ति उसके पास थी। 12 मील लंबी राक्षसी, और उसका कुरूप जो है उसने बदलकर एक सुंदर स्वरूप धारण कर लिया साधारण मानव का। माताओं को लगा कि ये साक्षात कोई देवी है, कृष्ण को सौंप दिया और कृष्ण किंतु जो है बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए। So this is what happens today. Nowadays, even in India, you have these salons for women to go and they get their hair fixed nicely and they get their fingernails. They get these long fingernails and they get their eyelashes longer and they get Botox and get rid of all their wrinkles and they wear these real tight dresses and jewelry and perfume and uh, and they entice people like this. And then you know they have real short dresses, so you see their legs, and then you see part of their breasts also. This is all planned. This is what the demons do. Putana and 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 what was the other? Ravana's sister. Yeah, this is what they do. तो आज भी देखते हैं कि कितने सारे बहुत सारे पार्लर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, अलग अलग प्रकार से सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें काटते हैं शरीर के, और फिर उन्हें समझाया जाता है कि आपने जो
कपड़े भी पहने वो ऐसे पहने जिससे कि लोग जो है आपके प्रति लालची हो जाए, आकर्षित करें उन्हें लालच के रूप में। तो ये वास्तव में है कुछ और स्वरूप और बन जाता है बिल्कुल जैसे पूतना बन गई सुंदर वैसे स्वरूप बन जाता है। And then people get fooled, you know. और सामान्य जनता जो है भ्रमित हो जाती है, मूर्ख बन जाती है। They think, oh, what a beautiful person is it? But it turns out to be a Rakshasi. साधारण व्यक्ति को लगता है कि कितना सुंदर ये व्यक्ति है, लेकिन पता चलता है बाद में कि ये तो राक्षस है। So one day there was this lady came to me. She said, Prabhuji, I want to talk to you. I said, okay, what is it? She said, when I got married, I was sure my husband was wrong. एक महिला महाराज जी के पास आई थी एक बार और वो कहने लगी कि आपको हमको हमें एक बहुत ही कुल्य बात बतानी थी। जब हमारी शादी हुई तो हमें बिल्कुल विश्वास था कि हमारे पति साक्षात राम हैं। She said, and now I've been married 3 months, and now I know he's not Ram, he's Rakshas. He's Ravana. और हमारी शादी को बहुत 3 महीने हुए हैं और पता चल गया कि ये राम नहीं, ये साक्षात राक्षस है, रावण। So there are two big mistakes you can make in your life. One is instead of getting bona fide guru, you choose a kangaroo. एक शब्द है अंग्रेजी में कैंगरू, कैंगरू का मतलब होता है कंगारू होता है। हाँ, तो महाराज जी कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि दो प्रचंड गलतियां व्यक्ति जो है अपने जीवन में करता है। प्रथम गलती यह करता है कि गुरु ढूंढने के प्रयास में कंगुरु ढूंढ लेता है, कैंगरू। So there are more kangaroos than gurus nowadays. और ये वास्तव बात है कि आज के समय में अधिकतर कंगारू मिलते हैं, गुरु तो कम ही मिलते हैं। And then the second biggest mistake you can make is marrying the wrong person. और दूसरी जो गलती आप कर सकते हो या करते हो वो ये है कि आप गलत व्यक्तित्व के साथ विवाह कर लेते हो। Now, I mean, accepting a kangaroo instead of a guru is devastating. गुरु की जगह किसी पाखंडी को अगर आपने जो कंगारू है उसको अगर आपने स्वीकार लिया तो आपका पूरा जीवन ध्वस्त हो जाएगा। But if you marry the wrong person, it is possible to fix that situation. अगर आपने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया है तो शायद आप उसको थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ सुधार ला सकते हो, संभावना है। So now I'm going to give you a secret. अब एक रहस्य की बात आपको समझाने जा रहा हूं। Let's say you married the wrong person. चलिए आपने किसी गलत व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। It could be the lady was the wrong one or the man was the wrong one, and they're abusive. They say mean things and so forth. वहां पर उस विवाह में आपका बहुत शोषण हो रहा है, परेशानी हो रही है, शब्दों द्वारा या अन्यथा। This is actually good. ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। Whenever your husband or your wife insults you, you should make a private vow. Every time I'm insulted, I'm going to chant 5 more rounds that day. अगर आपके पति या आपके पत्नी जब भी आपके साथ कुछ भला बुरा करते हैं तो मन ही मन आपने एक संकल्प करना है कि बुरा तो लग रहा है लेकिन उससे ज्यादा संकल्प ये करेंगे कि इस बुराई के लिए जो मुझे लग रहा है 5 माला और करें। Now, every time you get insulted, actually, that person insulted is your guru because he's inspiring you to chant more. तो अब देखिए पलट गया सारा किस्सा। जो Now, व्यक्ति आपको इस प्रकार से अपमानित कर रहा है अब आपके लिए वो गुरु स्वरूप हो गया क्योंकि हर बार जब आप अपमानित होते हो आप अधिक माला जप करें। because there's 2 ways of learning. दो प्रकार से हम जीवन में सीख प्राप्त कर सकते हैं। From pure devotees, you learn how to act correctly. अगर आप शुद्ध भक्तों की संगति में हो तो सब कुछ अच्छा ज्ञान आपको मिल जाए। And from nonsense people, you learn how not to act.
और जो लोग गलत हैं उनसे आप सीखते हो कि क्या गलत बात है नहीं करना चाहिए। They're both educating you. दोनों ही आपके लिए शिक्षाएं हैं। Now, if you make that vow, whenever I'm insulted by anybody, I'm going to chant 5 rounds more that day. And if they insult you 2 or 3 times, that's 15 rounds. It's like they're your guru. They're inspiring you to chant more. तो इस दृष्टिकोण से अगर समझ रहे हैं तो अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है अपने जीवन में और आप उसके उस अपमान को सहते हुए 5 अधिक माला कर रहे हो और सोचिए 3 बार अगर अपमानित कर दिया तो 15 मालाएं अधिक हो गए आपके उस दिन, तो कितना भला कर रहे हो आप अपने, वो Now, व्यक्ति आपके लिए गुरु स्वरूप हो गया। this might sound funny or like a joke, but it's actually serious. You have to learn to tolerate. Matras parsas tu konteyas titosna sukadukutaha agama prayanu nityas tams titikshas svabharata. Titiksha. You have to be tolerant. You have to not get angry. You have to understand Krishna is in my heart. He's my protector. I have nothing to worry about as long as I remain Krishna conscious. तो श्लोक में तितिक्षा शब्द से समझाया गया है कि आपको सहिष्णु बनना है और आपको शायद बात पर हंसी आ रही होगी लेकिन ये बात है बहुत गंभीर कि ऐसे भी परिस्थिति में जब आप सहिष्णु बनकर भगवान के प्रति और मन लगाते हो तो इसमें आपकी प्रगति होती है। So one time, Gandhi, he got really angry at his wife. तो एक समय उदाहरण दिया जा रहा है गांधी जी का जो अपनी पत्नी पर बहुत उन्हें क्रोध आ चुका था। He said, "Get out of my house. I don't want to see you anymore." और उन्होंने उनसे कहा कि घर से निकल जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं हम। So she walked out. He slammed the door. तो वो चुपचाप बाहर निकल गए और उन्होंने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया घर का। After a couple hours, he was thinking, "Oh, what did I do? I should not have done this." कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद जब मन थोड़ा शांत हुआ तो वो अपने आप को कोसने लगे कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। So he opened the door to go and find her, and she was sitting right there outside. तो दरवाजा खोलकर उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जब जैसे ही निकले तो देखे कि वो तो बाहर ही जो सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। So I said, "So you didn't go see your parents?" उन्होंने कहा, अच्छा तुम नहीं गई यहाँ से अपने माता पिता के घर नहीं गई? So she said, "Pati." They don't say the name of the husband. You know, husband doesn't say the name of the wife. It's either Pati or Patni, right? तो महाराज जी कह रहे हैं कि पहले का ऐसा रिवाज था कि पति पत्नी का एक दूसरे का नाम नहीं लिया करते थे। So she said, when we were married, my father and mother did kanyadan, and they gave me to you. And if you don't accept me, then I have no place to go. I'll just sit here and fast and die. तो उन्होंने कहा पतिदेव, जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारे माता पिता ने कन्यादान के समय हमें आपको सौंप दिया था। अब हमारे पास आपके अलावा कोई और तो है नहीं, तो अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम चुपचाप यहाँ पर बैठें और प्राण त्याग। This is the safety mechanism of kanyadan or marriage vow. There'll never be a separation. तो कन्यादान का ये सुरक्षा कवच है कि कन्यादान में जब कन्या को दान दे दिया जाता है, पति को सौंप दिया जाता है, तो उसके लिए एक सुरक्षा है कि आजीवन अब पति ने उसका ध्यान रखना है। So when you promise, you say, "We will never be separated." That's a vow. यहाँ पर वो अलग नहीं होते हैं क्योंकि प्रण लेते हैं विवाह के समय कि आजीवन रक्षा करेंगे। Just like when you're initiated, you make a vow, you promise, "I'm going to chant 16 good rounds and no meat, no murgi, and no nonsense, right? And no intoxication, and no illicit sex, and no gambling." You make a vow. That vow determines who you are. That becomes your identity. And if you break your vow, you're no longer a real person. दीक्षा के समय या ऐसे ही आप प्रण लेते हो कि आप अच्छे से 16 माला जो है नियमित रूप से रोज जप करोगे, मांसाहार नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे,
नशा नहीं करोगे, अवैध सन नहीं करोगे, तो अब ये आपका अस्तित्व है। अगर आप अपना प्रण जो है तोड़ते हो, अपने वचन तोड़ते हो, तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, अर्थात अब आप एक वास्तविक व्यक्ति नहीं रहे। So we have to be able to control our mind and our senses, and you do that by chanting. Just like someone asked me yesterday morning in the Dwarka temple, and they said, uh, "I, uh, well, I try my best, but sometimes my mind wanders, and I'm not able to follow everything." तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन में नाम जप करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए। कल महाराज जी दिल्ली में थे, वहां पर इस्कॉन द्वारका मंदिर में किसी ने पूछा कि करना बहुत कठिन होता है। So I told him, I said, "Look, you're chanting Hare Krishna. But when you feel your mind is going away to other things, then you have to chant much louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And keep chanting them, and you'll see those thoughts will go away. तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अगर जप करते हुए आपका मन भटकता है, तो उस समय आपने और जोर लगाकर जप करना चाहिए, ताकि आपका मन जप में केंद्रित हो। But if you're chanting, obviously your mind is going to go in 100 different places, right? Now, but you should chant so you have a closed circuit like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So there's a closed circuit from your lips to your ears. But if your mind starts wandering, they go, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो अगर मन भटक रहा है, और जैसे पहले महाराज जी ने बताया कि आप जो है फिर भी बड़े आसानी से, मतलब बिना ध्यान दिए जप कर रहे हो, तो आपका मन और भटकेगा। तो जब मन भटकता है, उस समय जोर लगाकर आपने जप करना चाहिए। So we have to be very serious about this Hare Krishna mantra and following the rules and regulations. One day a lady came up to me and said, in our temple in Seattle, she said, Prabhuji, I have to talk to you. It's very important. When Guru Dev comes, her Guru Dev was one of the sannyasis. He said, I'm going to complain about this devotee. This devotee is doing all kinds of nonsense, and I'm going to tell him everything about this devotee. तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक हमारे वचनों को निभाना चाहिए। एक बार एक महिला महाराज जी के पास आई, सियाटल में, अमेरिका में, मंदिर में आई, और उन्होंने कहा कि उनके जब गुरु आएंगे, जो एक सन्यासी हैं, जब वो आएंगे सियाटल में, तो वो एक भक्त के बारे में, एक दूसरे व्यक्ति के बारे में उनके गुरु को कंप्लेन करेंगी कि यह व्यक्ति जो है बहुत उल्टा सीधा काम करता है। I said, Mataji, what did you promise when you were initiated? You tell me. महाराज ने उनसे पूछा कि माता जी, आपने दीक्षा के समय क्या वचन दिए थे, जरा बताएं। She said, well, I promised to chant Hare Krishna and not eat meat or fish or eggs, and no intoxication, no illicit sex, no gambling. तो उन्होंने कहा कि नाम जप करने का और 4 नियम, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, इसका हमने वचन दिया था। I said, did you promise to complain about something or someone? क्या आपने किसी के बारे में कंप्लेन करने का भी वचन लिया है? I said, you just stick to what you promised. The temple president, you can tell him about that person who's not following, but that's not your business to complain about someone. If you want to complain, you complain to the temple president, but you just concentrate on following the 4 regulative principles and chanting 16 minimum good rounds every day. आपने सिर्फ ध्यान इन वचनों पे रखना है कि 16 माला नाम जप करना है और 4 नियमों का अच्छे से पालन करना है। अगर आपको कोई समस्या है किसी के बारे में, तो मंदिर में एक अध्यक्ष होते हैं, उनके पास जाकर अपनी समस्या बताएं, किसी के बारे में कंप्लेन करें, लेकिन गुरु को आपने जो वचन दिया है, उन्हीं वचनों पर ध्यान दें, अन्य किसी और बातों पर ध्यान न दें। So if we chant very nicely every day, and preferably in the Brahma Muhurta, that's when the best rounds are chanted. And then, but you have to go to sleep early
before 10 o'clock so you can wake up early and still come to Mangalarti, everything. And follow the regulative principles strictly. People die because of illicit sex, gambling, intoxication, and meat eating. Nobody ever died because they chant 16 rounds and follow the four regulative principles. In fact, they get healthy. तो इसलिए नाम जप करना खास करके विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे अच्छा नाम जप होता है, यह महत्वपूर्ण है। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से नाम जप करने के लिए आवश्यक है कि 10 बजे से पूर्व रात में आपने विश्राम करना चाहिए, ताकि सवेरे आपके पास बहुत शक्ति हो नाम स्मरण के लिए। देखा यह गया है कि इस जगत में अवैध संग करने से, जुआ खेलने से, नशा करने से या मांसाहार करने से लोगों का स्वास्थ्य में बहुत परेशानी आती है, यहाँ तक कि उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। किंतु आज तक कभी यह सुनाई नहीं दिया कि 4 नियमों का जो अच्छे से पालन कर रहा है उसका स्वास्थ्य बिगड़ा है या अकाल मृत्यु आई है। उनका स्वास्थ्य बल्कि अच्छा है। So, last thing I'm going to say. आखिरी उपदेश आपसे करने जा रहे हैं। This is the advice I give whenever I do a marriage ceremony. यह उपदेश हम विवाह के समय जो जिनका विवाह हो रहा है उन्हें देते हैं। I look at the husband or the groom and I tell him, if you want to be married the rest of your life, don't ever say one nasty word to your wife. जो लड़का है, जो वर है, उसकी ओर देखकर वो कहते हैं, महाराज उनको उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभे, तो कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ना बोलना चाहिए। Because your wife is Devi Dasi. क्योंकि आपकी जो पत्नी है, देवी दासी उनका नाम है, अर्थात वो साक्षात देवी स्वरूप है। She's like a devata. वो देवी देवता है। So you should never insult or speak harshly. And I said, you know why? इसलिए कभी भी अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए या उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए। आपको पता है क्यों? Because women are like elephants. क्योंकि स्त्री जो है वो हाथी समान होती है। They never forget. किसी भी बात को कभी भूलते नहीं। This is, I'll give you a real life, let's say, experience I had. जो साक्षात अपने जीवन का एक अनुभव सुनाने जा रहे हैं। I had an uncle. इनके एक चाचा जी थे। He was very, very strict with himself. वो बहुत अपने जीवन में बहुत ही कट्टर विचार के थे। He would wake up every day, 4 o'clock, 3:30, 4 o'clock in the morning. प्रामाणिक भी थे, सवेरे हमेशा 4 बजे हर दिन उठते थे। But he didn't chant Hare Krishna. हरे कृष्ण जप नहीं करते थे। He would cut his salad for the day. सवेरे वो सलाद काटते थे अपने लिए। And he would cut it very, very small बहुत pieces. ध्यानपूर्वक एक समान आकार का वो काटते थे। So one time I was able to stay in their house, my uncle's house, for about 4 or 5 days. So I was waking up early too. So I would watch him cutting his salad. एक बार 4-5 दिन के लिए महाराज जी अपने चाचा के घर रुके हुए थे, तो देख रहे थे कि कितनी प्रामाणिकता से और एकदम कट्टरता से, मतलब एक एक टुकड़ा जो है समान आकार। So I said, Uncle G, I said, how come you're cutting your salad so small? हमने उनसे पूछा कि चाचा जी, आप अपने सलाद को इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में कैसे काटते हैं? He says, I'm glad you asked. हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे प्रश्न पूछा। He said, I cut it small so I can digest it easier. चाचा जी ने कहा, छोटा-छोटा इसलिए काटता हूं कि पचाने में आसानी होती है। See, that's the kind of person he was. He was very, very strict with himself, but he looked into every detail of his life. तो देखिए कितना ये जो है अच्छा चक्करपन है या अच्छा ये प्रामाणिकता है कि अपना सेहत सही रहे, इसके लिए हर चीज को कितने बारीकी से वो काम करते हैं। So then his wife would come फिर उनकी पत्नी चाची जी around 7 o'clock in the morning. 7 बजे वो उठती थी, आती थी। She was also regulated.
वो भी प्रामाणिक थे अपने जीवन Right. में। And as soon as she came, the argument started. जैसे ही वो आती, तुरंत दोनों में बहस शुरू हो जाता। They would argue the whole day पूरा दिन बहस करते थे एक दूसरे के until साथ they went to sleep at night और फिर विश्राम करने रात में जाते। because she had a list. I mean, they were at that time, they were married about 40, 50 years. She had a list going from here all the way down here, all the way down to her feet of mistakes that he made. 50 वर्ष बीत चुके थे उनके विवाह को और चाची जी के पास एक पूरा लिस्ट था ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पर एक एक गलती उन्होंने याद रखी थी जो उन्होंने किया था। She had it memorized. पूरी तरह से वे कंठस्थ था And all day long, they're arguing और हर about all दिन the mistakes he made. हर दिन पूरे दिन उसी पर बहस चलती रहती थी। It made him go crazy. 50 वर्ष तक सोचिए कितना कैसा पागलपन था। So he had to, even though he was like 78 years old, he was still working so he could get away from her. 70 वर्ष की आयु में भी वो काम करते थे घर से बाहर निकलने का उन्हें ये बहाना मिल गया। So my uncle told me once, he said, I'm doing this, meaning cutting this salad real small. I'm going to live to be 120 years old. चाचा ने कहा कि अब बताते हैं हम इसको छोटा छोटा इसलिए काटते हैं ताकि हमारी उम्र लंबी हो 120 वर्ष हम जिए। And he would have. I mean, he was like an Iron Man. बहुत ही उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और शायद वो जी भी जाते। But one day, she got him so angry. He just put on his coat, opened the door, and walked out. He was just fuming mad, and he got run over by a bus. लेकिन हुआ ये कि एक दिन बहुत ज्यादा बहस हो गया, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और ऐसे मानसिक परिस्थिति में जोर से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गए रोड पर, ध्यान नहीं दिया कहाँ जा रहे हैं और एक बस के नीचे आ गए। Because he got so angry at his wife, he couldn't control his mind and he wasn't watching where he was going. He just had to get away from her. घर से बाहर निकलने के इतनी परेशानी घर में थी कि घर से बाहर निकलने के प्रयास में और क्रोध भी आया था इन सारे बहस की वजह से, ध्यान नहीं था। He was run over by that bus. बस पूरी तरह से कुचल दिया उन्हें। But he didn't die because he was like an Iron Man. लेकिन फिर भी मरे नहीं क्योंकि कितना ताकतवर थे। But after suffering for 3 weeks in the hospital, he finally died. 3 सप्ताह तड़पते तड़पते अस्पताल में उन्होंने प्राण त्यागा। So, always remember, Devi Dasi. इसलिए हमेशा याद Always रखना। remember. Always remember. Now, after instructing the groom, then I talked to uh, the bride, and I took yeah. और अब जो है वधू अर्थात जो कन्या है उससे सलाह देते हैं महाराज। I say, Mataji, I can guarantee you your husband's going to make mistakes. तो वो कहते हैं माता जी हम आपको पूरा गारंटी दे रहे हैं कि आपके पति गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। But your dharma should be to forgive. आपका धर्म है कि आप माफ करना सीखें। You have to learn to forgive. आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे दूसरों को माफ किया जाए। Otherwise, your marriage will be broken. नहीं तो आपकी शादी टिकेगी नहीं। So there's a nice verse in Bhagavad Gita. I'm going to read it to you very quickly. भगवद गीता से एक सुंदर श्लोक इसी संदर्भ में This is महाराज जी 12th chapter, बताने वाले 12वां अध्याय and verse 13 and 14. Advesta sarvabhutanam maitrakarana evacha nirmamo nirahankara samadukha sukham shami, and so forth. Santustas tatam yogi yatatma drita nischaya mayarpata mano buddhir yomad bhakta samechi samam same priya. So this verse says, one who is not envious, but is a kind friend to all living entities, etc. But in the purport, Prabhupada writes, coming again to the point of pure devotional service. तो प्रभुपाद जी जो 13 और 14 श्लोक है 12वें अध्याय का
उसमें तात्पर्य में कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, the Lord is describing the transcendental qualities of a pure devotee in these two verses. इन दो श्लोकों में भगवान एक भक्त का जो कि पूरी तरह से मुक्त भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। A pure devotee is never disturbed in any circumstances, शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में कभी भी उसका मन विचलित नहीं होता nor he or she is envious of anyone, और ना ही किसी के प्रति द्वेष करता है, nor does a devotee become his enemy's enemy. ना ही वो अपने शत्रु का भी शत्रु नहीं बनता है। He thinks, वो विचार करता है, this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. यह व्यक्ति मेरा शत्रु इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूर्व में मैंने कोई गलती की होगी, So it is better to suffer than to protest. इसलिए सहिष्णु बनकर इसे स्वीकारना चाहिए, प्रतिकार नहीं करना चाहिए। It's better to suffer than to protest. सहो लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, यह ज्यादा अच्छा है। It's better to suffer than to protest. सहना चाहिए हमें, ना कि अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त करना। We have to understand what this means. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है। It means you have such a relationship with Krishna in your heart that nothing can disturb it. भगवान श्री कृष्ण जो आपके हृदय में, उनके साथ इतना निकटतम आपका संबंध है कि कोई भी परिस्थिति जो है उसे छू नहीं पाती, तोड़ नहीं पाती। Therefore, you can suffer than protest. और इसी कारण से आप उस परिस्थिति में भी सह लेते हो उसे, ना कि अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त करते। Because you have so much faith in Krishna that he's going to protect you in every instance, like he protected Prahlad Maharaj, like he protected the Pandavas, like he protected Dhruva Maharaj, etc. He's going to protect you also. क्योंकि आप जानते हो कि इस परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में भगवान जो आपके हृदय में है वो हमेशा से आपको संरक्षण, पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद महाराज को प्रदान किया, पांडवों को प्रदान किया, ध्रुव महाराज को। So I'll stop right there. There are many other stories, but we'll talk some more. आज के लिए यही पर कथा को विराम देते हैं, और आप लोग जानते हैं कि और भी कहानियां हैं, इसलिए कथा में आते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Are there any questions? प्रश्न? अच्छा, जोर से। Guru Maharaj, may I correct myself? Please. You're going to make a Yes. confession? Is that what you mean? No. I have made a mistake. Okay, go ahead. Would you please ask my name one more time? What is your name? My name is Makhanchor Das. Haribo, 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 Hare Krishna. Very nice. Kanchur Das, very nice. Haribo. Any other questions? That was not a question. That was a nice answer. Just given by yourself, sir. Haribo, Haribo, Haribo. Any other questions? No questions? Thank you. बहुत सुंदर प्रभु जी ने हमें प्रवचन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आज हर नगर में, हर गांव के अंदर ये जो ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, इसमें महारानियां अंदर जाती है और पुतना बाहर निकलती है। टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये जानना चाहता हूँ इसे कैसे रोका जाए। Thank you very much for a wonderful presentation, Maharaj. Especially You the don't have point to. of They don't have to say that. They don't have to say that. I understand. You don't have to say it. Just go into the question. Go ahead. So he especially liked the point about the salons. Yeah. Where Putana gets covered over into a Devi. Yes. What can be done to change the situation?
That's a good question. But let's find out why that's happening first. Then we can understand how to stop. आपका प्रश्न अच्छा है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, तब जाकर उसे रोकने का हम प्रयास कर सकते Previously, even 100 years ago, especially in Bengal, a respectable woman would never walk on the street. हैं। पूर्व काल में, खास करके बंगाल में, आज से 100 साल से अधिक पहले, एक बहुत ही सम्मानित स्त्री अकेले रोड पर, रास्ते पर नहीं चलती। These very, let's say, um, uh, very chaste women, married women, they would be carried by four men in a, what do you call it, palanquin, ऐसे प्रतिष्ठित palki. या Yeah. ऐसे सत्य विचार रखने वाली स्त्रियां जो हैं, अगर वो कहीं जाना चाहती थी तो चार लोग जो हैं अपने कंधे पर पालकी में उन्हें बिठाकर ले जाया करते थे। And on both sides there was a curtain, और so no one could see her. दोनों तरफ पर्दा होता था ताकि, That's how strict they were. और ये वो स्वयं करते थे अपने लिए। So that whole culture has more or less gone away. और ये जो संस्कृति है आज जो है शायद हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। Why? क्यों? Because of material education. जो आज का हमें विद्या, जो शिक्षा दी जाती है पाठशालाओं में, उसकी वजह से। Before, most people were living in villages. पहले अधिकतर जनता जो है वो गांव में रहती थी। And you had real brahmanas who had vows of poverty. उस समय जो भी ज्ञानी व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, वो स्वयं गरीबी में स्वेच्छा से रहते थे। And they would educate the little kids in the village for free. और वह शिक्षा छोटे बच्चों को प्रशिक्षित करते थे, ज्ञान देते थे बिना कुछ उनसे धन लिए। And they would have a moringa tree and a cow. और ऐसे मुफ्त में विद्या दान करते हुए अपने लिए स्वयं उनके पास उनका धन सिर्फ एक वृक्ष, मोरिंगा वृक्ष होता था, और एक गाय। Because you can eat the leaves and the pods of the moringa tree, and you can use the bark and other parts of the tree for medicine. And the cow, you get fresh milk every day. So they were happy. तो जो फल है उस वृक्ष का, वो फल खा सकते थे। जो बलकल है उससे वो अपने पहनने के लिए कुछ पहनावा बना सकते थे, और गाय से उन्हें दूध मिलता था। And they had a hut made of gobar and mud, and the wife could cook something. Sometimes the Brahmin would go out and beg, not from people, but he would go and pick up grains after harvest, or pick fresh greens in the forest. They lived very simply. And they spent most of their time, the Brahmanas, they spent most of their time teaching the kids and doing ceremonies for the people and healing people with knowledge. Yeah. मिट्टी गोबर से बना हुआ घर और छत जो है ऐसे ही सामान्य वस्तु से बना हुआ छत, खाने के लिए भिक्षु के रूप में जब भी जो भी कुछ बच जाता था खेतों में, वो इकट्ठा करना, या जंगलों से कुछ पदार्थ इकट्ठा करना, इस प्रकार से सरल जीवन जीते थे। गरीबी, बाह्य दृष्टिकोण से गरीबी में रहते थे, स्वेच्छा से। और विद्या दान करने में उनकी परम रुचि होती थी। छोटे बच्चों को ज्ञान प्रदान करते थे और लोगों को, उनके मन को भी जो है तंदुरुस्त करते थे विद्या दान करके, और जरूरत पड़ने पर औषधि भी प्रदान करते थे। And people living in the villages, they would have a compound in which there were 3, 4, sometimes 5 generations of family living together. और एक ही घर में कभी-कभी 4-5 पीढ़ियां छोटे से क्षेत्र में रहते थे घर में। And everyone was listening to Pitaji or grandfather and grandmother, so there was oneness. They would not argue. Whatever
the grandsires would say, that's what they would do. और जो सबसे बड़ी पीढ़ी थी, जो उसमें दादाजी थे, परदादाजी थे, उनकी बात हर कोई मानता था, सारी पीढ़ियां मानती थी, इसलिए कभी भी ज्यादा बहस नहीं होता था। And when you have such a large group of people working together cooperatively in a family, then obviously there's opulence. और जब इस प्रकार से इतने सारे लोग घुल मिलकर एक साथ रहते हैं एक ही परिवार में, तो सुनिश्चित है कि उस परिवार में सारा जो भी ऐश्वर्य है उन्हें प्राप्त हो जाता है। Therefore, they were happy, they were peaceful, they were prosperous, and they were protected by the mercy of Krishna. इसलिए वो सुखी रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण उन्हें प्राप्त था और शांत रहते थे। So now fast forward till today. और अब आज के समय में देखते हैं, when Pitaji dies, then all the brothers and sisters, they all start fighting with each other what they're going to get. मुश्किल से दो पीढ़ियां साथ में रहती हैं और जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो सारे बंधुजन जो है एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि संपत्ति कितनी किसके प्राप्त हो। And people, they're watching television all day long. और दिन भर जो है स्क्रीन चाहे टेलीविजन हो या फोन पर वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं। Instead of hearing kirtans, they're hearing Bollywood songs. इसके ऊपर कीर्तन सुन सकते हैं, लेकिन कीर्तन सुनने की जगह वो साधारण जो गीत हैं बॉलीवुड के गाने हैं वो सुनते हैं। And today there's no difference between Bollywood and Hollywood. It's the same thing. All nonsense. आजकल वो हॉलीवुड भी देख लेते हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही आपके जीवन को नष्ट कर देता है। Before there were no televisions in the village. गांव में पहले कोई टीवी नहीं हुआ करता था। Every morning, going out to the fields to work, the men would first go to the temple. प्रातः हर दिन प्रातः मंदिर जाना और फिर वहां से खेतों में काम करने के लिए जाना। And they would pray to God, please let us have rain, please let us have changing season regularly, things like that. And it was happening. The rain was coming. There was no like hurricanes and earthquakes and things like that. It was a very peaceful life. And that's why India was so rich. प्रार्थना करते थे भगवान से कि उनकी जो भी प्राकृतिक आवश्यकताएं जैसे कि वर्षा हो या फिर किसी प्रकार से विपत्तियां ना आए, प्रार्थना करते थे और हम देखते हैं कि वैसा होता भी था। अब कोई भी आपदा विपदा नहीं आती थी जिससे कि उनको उनका जीवन जो है तकलीफ में चला जाए। And there was no, internet and television and cell phones and outsourcing, so people work at night so they can help the Americans make more money during the day. It's all nonsense. They were living a really nice, regulated life, and it was prosperous, and they were happy. And they taught their children to be good and be real devotees. उनके पास इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, बटाई पर काम देकर दूसरों के लिए नौकरी करना ऐसा जीवन नहीं करते थे वो। फिर भी उनका जीवन जो है सुखमय जीवन था, संतोषमय जीवन था। Nowadays, one son is in America, second son is in Europe, third son is in Japan. They only see each other maybe once every 5 years, right? आज के समय में एक संतान अमेरिका में है, दूसरा यूरोप में है, तीसरा जापान में है, माता पिता भारत में है और शायद 4-5 वर्षों में एक साथ सारा परिवार इकट्ठा हो सकता है। And the parents are there alone with their land, and eventually they sell the land and live in some small concrete apartment, and they eat junk food, and the whole thing is broken. The और whole जो माता पिता हैं खेती कर नहीं पाते हैं तो अंततः वो बेचकर छोटा सा एक अपार्टमेंट कहीं पर फ्लैट ले लेते हैं, छोटा सा एक कमरा जिसमें बंद रह हो जाते हैं और खाने के लिए अब खेत का भोजन ना मिलते हुए जो भी बाजार में मिलता है जिससे कि स्वास्थ्य खराब हो वो खाते रहते हैं। and they put their kids in Christian schools so that they will not learn anything about Sanatan Dharma, because English
Christian schools are the best schools in India. This is nonsense. This is big nonsense. और अपने बच्चों को ऐसे पाठशाला में डालना जहाँ पर सनातन धर्म के कोई भी ज्ञान न दिया जाए, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है भारत और भारतवासियों को। And then, how did they get the people in the villages to watch television? First, they put on Mahabharata, and then they put on the uh, the Ramayana, right? They started like that. लोगों को कैसे, खास करके गांव में लोग टेलीविजन देखना शुरू कैसे करें, तो पहले शुरुआत करते हैं महाभारत दिखाकर, फिर रामायण दिखाकर। Then once the people had to have a television to see Mahabharata, right, and Ramayana. But now they have the television. So then they started putting in a little Bollywood here, Bollywood there, this thing and that thing. Now there's very little Mahabharata and Ramayana. Now they're watching, women are half naked dancing and men kissing them and all these stories, love stories, love language, love marriage, blah, blah, blah. And there's guns. People are shooting each other all the time in the movies. The whole culture has become turned upside down. Huh? तो महाभारत रामायण देखकर वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब टेलीविजन है तो कुछ ना कुछ तो देखना है। तो टीवी पर क्या देखेंगे, पिक्चर देखते हैं, गाने देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं। उसमें देखते क्या है, उसमें देखते हैं किस प्रकार से हत्या की जाती है, किस प्रकार से बंदूकें चलाई जाते हैं, किस प्रकार से माता पिता परिवार को ना पता है, वो पता चले फिर भी प्रेम विवाह करना इत्यादि चीजें जो है, कपड़े जो है अश्लील कपड़े पहनना, ये सारी चीजें जो है बताई जाती है। ये सारी चीजें लोग देखते हैं और फिर इससे होता क्या है, इससे परिवार में फूट पड़ती है। So the children are being educated now by the television and by the Christian schools. What do you think the result is going to be? आपसे एक प्रश्न ये है कि अगर बच्चे जो हैं ऐसे टेलीविजन देखते रहे और उन पाठशालाओं में जाए जहां पर सनातन धर्म नहीं सिखाया जाता है, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन स्कूल होते हैं इत्यादि, तो So, आपको क्या लगता है कि क्या परिणाम होगा उसका? so even in Seattle, in the United States, I tell people, if you have a television, first you open your window and make sure no one's outside. Then you get the television and throw the damn thing out the window. सियाटल में अमेरिका में भी महाराज ये सलाह लोगों को देते हैं कि अगर आपके पास टेलीविजन है बदकिस्मती से, तो आप अपने घर का खिड़की खोलिए Now, और नीचे ध्यान दीजिए कि कोई नहीं है, फिर उस टेलीविजन को नीचे फेंक कर उसको नष्ट कर दीजिए। and throw the cell phone out and throw the computer out. Make your house tech free. आपके घर में जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपका सेल फोन, जैसे कि आपका कंप्यूटर, जिसका कोई ज्यादा प्रयोग होता नहीं, ऐसी चीजों को आप घर से बाहर निकाल दीजिए ताकि आपका घर पूरी तरह से ऐसे झंझट वाले औजारों से मुक्त हो जाए। So I'm going to ask a question now. आप लोगों से भी प्रश्न पूछने हैं। Anyone can raise their hand. कोई भी हाथ ऊपर करके उत्तर दे सकते हैं। Has anyone here murdered someone? क्या आप में से किसी ने किसी का मर्डर किया है? Raise your hand if you हाथ murdered ऊपर someone. कीजिए अगर आपने किया है। All right, I'm going to ask a second question. Has anyone ever seen someone murdered? क्या आपने कभी किसी की हत्या होते हुए, मर्डर होते हुए देखा है? हाथ ऊपर कीजिए अगर देखा है। But when you open a television, in 10 minutes, you see 5 people murdered. लेकिन जब आप टीवी खोलते हो, देखिए टीवी खोलते हो तो एक दिन में कम से कम 4-5 मर्डर आप टीवी पर देख लेते हैं। This is called entertainment. और ये आप सोचते हैं कि आनंद है। You know, people say, "Oh, look, he's being choked to death. It's very देखो interesting." उसे गला दबाकर मारा जा रहा है, कितना मतलब कैसा दृश्य है। Oh, this got a automatic rifle and he's killing people. ऑटोमेटिक इसके बाद बंदूक है और उसे कितने सारे लोगों की हत्या कर रहा है, बैठ के What देख रहे हो। What do you think happens to the brain when you see things like that? आपको क्या लगता है आपकी बुद्धि में कैसे संस्कार पड़ रहे हैं जब आप ये सारी चीजें देखते हैं? And then you buy your kid what do you call those? Uh, yeah, you buy them a computer game. Computer game. और आप अपने बच्चों के लिए फिर क्या खरीदते हो? कंप्यूटर गेम्स। Most of computer games made for kids are planned to kill someone in order to advance to the next stage of the computer game.
इसमें अलग अलग लेवल होता है, तो अगर बच्चा एक लेवल से दूसरे लेवल जाना चाहता है तो वो तभी कर सकता है जब उस गेम के अंदर वो किसी न किसी की हत्या करे। You might not know because you don't have the computer game, but people buy these computer games for their kids. So one time I went to a house, we were doing puja, and at one point it was time to have prasad, and the mother was calling her boy. Said, Raj, come down now. Ai, your cow. He said, Mom, I'm a little busy here. I'm playing this computer game. She said, Raj, come now, come now. I said, No, no, I got to kill this guy to go to the next step. He's killing in order to advance in the computer game. What do you think that does to a kid's mind? शायद आप लोग के बच्चे नहीं खेलते होंगे ऐसे, महाराज कह रहे हैं, पता नहीं, लेकिन महाराज जी एक बार किसी के यहाँ किसी पूजा में गए थे, तो वहां पर समय आ गया था कि सब कोई प्रसाद ग्रहण करें, तो जो यजमान थे वो अपने संतान को बुला रहे थे, अपने पुत्र को बुला रहे थे, राज था कि राज आओ खाना खाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं खेल रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तो उन्होंने फिर से कहा कि आ जाओ बेटा खाओ। मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तभी आ सकता हूँ अगर मैंने इस व्यक्ति को मार दिया और अगले लेवल तक चला गया, नहीं तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। सोचिए उसके पर मन पर क्या परिणाम पड़ रहा है। So what do you expect? तो फिर आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं समाज में? The culture has changed, and for two cultures, for two generations now, parents have not been able to transform or transmit their culture to their kids because of the Christian schools and because of the television. They have not been able to teach their kids. So when the kid is small, they say, J Karo, J Karo, J Karo. And the kid goes down, does J Karo. But they get to be 15, 16, they say, I'm not going to do J Karo. I don't understand what it's all about. ये जो संस्कार बदल चुके हैं समाज में, दो पीढ़ी से ये हो गया है, क्योंकि दो पीढ़ियों से जो माता पिता थे उन्होंने यह संस्कार अपने बच्चों को लगातार दिए नहीं। बच्चे जो हैं टेलीविजन से और ऐसे क्रिश्चियन स्कूल से ही सारे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो जब छोटे होते हैं माता पिता बच्चे से कहते हैं जय करो, तो बच्चा जो है कर लेता है, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पूछता है क्यों जय करना है, इसमें मुझे कुछ अर्थ दिखाई नहीं देता, नहीं करता वो। There's been the culture transmission has been broken. ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संस्कार प्रदान करने की प्रणाली है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। And it's just getting worse. It's not getting better. और समस्या ये परेशानी है कि ये और खराब होते जा रहा है, ना कि इसमें कोई बदलाव हो रहा है। So we'll talk more about this. आगे हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे। There is a solution. इसके लिए महाराज के पास एक सॉल्यूशन है। Go to Premanandi Haribo. Sorry it took so long. I got carried away. हरे कृष्ण। महाराज जी प्रवचन समाप्त हुआ, कह रहे हैं कि थोड़ा देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरिबो। हाँ, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। Thank you so much, Guru Maharaj, for your wonderful class. आज आज शाम को 6:30 बजे इसी स्थान पर महाराज जी द्वारा कथा होगी, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी भक्त कथा के जरूर और कल नित्यानंद त्रयोदशी है। What I'd like to do, part of the program, I'll sing some bhajans, if that's all आप right. सभी भक्त नित्यानंद त्रयोदशी में आज जैसे आए सो हम 5 बजे यहाँ पर Yeah, I have the words. I'll give प्रसाद जपा होता है। We'll try to get the Hindi version of it, the local language. Yeah, okay. That script, we'll try to see if we can find it. भागवतम I क्लास have the sheet. उसके Try to look पश्चात for it. Yeah, I यहाँ have पर the sheet. दीक्षा समारोह होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, अभिषेक होगा, भगवान श्री श्री गौरी निताई का आरती होगा। तो इन सभी Tomorrow's इसको program आप लाभ about लीजिए। Diksha. हरे कृष्ण। Okay. महाराज जी ने अभी भी कहा है कि शाम में महाराज भजन भी देने वाले हैं, अच्छे से भजन देते हैं, तो उसके लिए आप सबको जरूर, आप और जो लोग नहीं है सबको जरूर बुलाइए। आज शाम में प्रवचन होगा और भजन भी होगा। को भी बताइए, जरूर बुलाइए कार्यक्रम में। आपके आप्त रिश्तेदार कोई रहेंगे, पड़ोसी जो रहेंगे, उन्हें भी जरूर इस सुवर्ण संधि का लाभ दीजिए। हरे कृष्ण।